Ladies and gentlemen, we welcome you all. Ladies and gentlemen, we welcome you all to the Q2 FY24 post-earnings conference call of Markolines Pavement Technologies Limited. Today on the call from the management, we have with us Mr. Vijay Oswal, co-founder and CFO, Mr. Prashant Mohite, Chief Administrative Officer. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainties. Also a reminder that this call is being recorded. I would now request the management to detail us about the business since this is our first call. Talk in brief about the performance highlights for the quarter, your good growth plans and visions for the company for the coming years, post which we will open the floor for Q&A. Over to you, Vijay. Yeah, good afternoon, everybody. Thank you very much for being with us on this particular conference call. It is a pleasure for Markolines management to present you whatever our performance. Now, since this is our first call, let me just quickly take you through what is Markolines. So basically, Markolines was founded in 2002 and with a single product called as road marking. And subsequently, we kept on adding various product lines. And now today, we are the India's largest company in terms of the highway sector, wherein we do the only highway maintenances. So from 2002 to 2009, we were doing various activities. When the BOT was coming in picture, we saw that as an opportunity and got into the highway operations and maintenances. And subsequently, we added various products. Markolines has always been, focused. Our focus has been on to the, innovations and latest technology. So that is how we have always been instrumental in bringing latest and new technologies in terms of highway maintenance to India. So in 2015, when we were, or rather 2014, when we introduced microsurfacing. So microsurfacing was before we entered microsurfacing, there was not much of the work done in India, but it was very useful, latest technology, environmental friendly, which could enhance the life of the road from 100 to 300%. So we did a lot of work on that, increase the potential, and today we are also the largest microsurfacing applicator in the country. Subsequently, we added the major maintenances, that is conventional, but along with the conventional maintenances, what we also did is we brought in the technology called as CIPR, that is cold in place recycling. In a common man language, I can say it is a recycling of road. There's an equipment train which runs over a bad road, and practically as the train walks through of the equipments, the new road is laid except the last finishing road. Similarly, we are doing the lot of work in FDR. FDR is full depth reclamation. A lot of today after the Modi government, the highway sector has really picked up and it is on a very growing path. From about 14 kilometers a day today, probably we are doing about close to 45 kilometers a day. New roads are being actually prepared in India. And in this, a lot of greenfield projects are coming where the soils are, the roads are passing through the, greenfield areas, farmlands, wherein it is very difficult to have a hard subbase. So FDR is a treatment, or a soil stabilization is a treatment where the soil is treated chemically and the hard subbase is formed. And then recently we have also ventured into tunneling, because looking at the vast and varied terrain of India, tunneling is a way forward, because if you have to increase the speed of the logistics,
we need to have a lot of tunnels so that we can increase the speed. So recently we have got into the tunneling. Now, as of now, we are doing two projects, one in Maharashtra and one we have taken in consortium with other contractors in Jammu Kashmir. As far as Markolines goes, management, it is me and Mr. Sanjay Patil who are the founder members of this Markoline. Sanjay Patil is founder, chairman, and managing director. He takes care of the all business development and the execution on site. I look after the financial aspects. We also have Mr. Karan Bora as our director and Mr. SP Nagarkar as our director technical. Practically, we are working across the length and breadth of the country. And as of now, we are working with every multinational fund or the NVIDs that is working in India in the highway space. And our clientele would include Cube Highways or the Actis, Safeway, then the Tata Realty, L&T, Peak Infra, Highway Concession, Actis, that is the latest fund who has come to into this space. So this is a quick journey of Markolines. And then you all have our, as I mentioned, our major services are divided into three categories. Highway maintenances, wherein we do the preventive maintenance and major maintenances. The preventive maintenance is a micro surfacing, basically, or wherein the roads are repaired before it is due for the periodic maintenance to enhance the life. Major maintenance is a typical conventional maintenance where a 40 layer of bituminous concrete is laid on the road surface to re-strengthen because it is wear and tear items. Then specializes maintenances, as I said, microsurfacing and CIPR, which I explained. And the specialized construction services like which are required while in the construction phase of the road, which are very specialized. The one is called as soil stabilization and the tunneling. So this is what in short about the Markolines. Now, as of today, we have about close to 500 crores of order book in hand. And the one second. Yeah, 500 crores of this thing. We have already published our half yearly results. You must have, I suppose you all have gone through that. And now this is in brief about Markolines. If you all have, we can, Vinay, we can open for Q&A if people wants to know more about the company. Sure, sir. Anybody who wishes to ask a question, may please raise your hand. So Lakshmikant Kabra is unmuted. You can go ahead, please. Mr. Kabra, do you wish to ask a question? I am audible. Yeah, go ahead, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. You have briefly explained the nature of your business, and we really interesting. So I understand that the company is more into the service industry than the construction or construction of the roads and infrastructure, right? Very true. Your H124 results, sir, and did not go through. Mr. Kabra, your voice is not audible. Okay. Is audible now? Yes, yes. Yeah. In the recent past, our rights issue did not go through. Thereafter, I have observed that there has been increase in the non-current as well as current borrowing subsidy. And the borrowings and the non-current borrowings have increased despite the drop in the turnover. So can you briefly explain where the our operational profits have been deployed?
मेरे को हेडिंग का तो पता है. Heading what are the reasons of There is a background voice, Mr. Kabra. आपके पीछे Sir, कोई sir, you बात? can continue. हाँ जी. yeah, and what are the reasons of increase in the current and non-current borrowings, sir? Okay. So Yeah. basically, अगर आप देखेंगे तो the non-current, there is a, we have recently purchased some assets which are required for, जैसे मैंने आपको अभी बताया, I had told you about the FDR and CIPR. So we have purchased the equipments, which is the costly equipment costing about 9-10 crore rupees. So that is how our borrowings have increased. And since we have a lot of orders in hand and our business, as far as the drop in the Vinay, there is a background noise. Continue, sir. I have muted him. Yeah. So as far as turnover goes, all the infra companies would go through this cycle. There's a variation in H1 and H2. There is possible because typically we do not have much of a work and scope during the monsoon. So based on the monsoons, wherever our maintenance is going on, our results could vary in the H1 because typically in the H2 we do more turnover than the H1. Though of course, if we get the maintenance project, particularly in that year where there is there are rain shadow areas, then at times the turnovers also could be maintained, but they are varied. But as far as this thing is concerned, current borrowings. So since we have now 4 or 5 major projects going on, we've taken WDCL, a WCDL from our bank, and that is how the borrowings have gone up. So these are the two reasons for the non-current and current borrowings going up. Because Sir, from the financials, we understand that you have invested around 10 crore subsidiary or some in like they are shown as investments. okay. So as I presume that the same have been funded out. Okay, let me explain that. So it is basically I presume that out of these borrowings. Is that correct? no. The investments what are showing is basically the And investment. sorry to interrupt you. And sir, portion Vinay, I cannot hear him. 9 crores. So what are the reasons of such a substantial increase in the receivables portion? Mr. Kabra, I did not hear your question completely. I could only hear the last sentence. There are two things. One, that you have made investment of 10 crores. I presume that the investment is out of the. Second question is the reasons for substantial jump in the receivables part. Okay, two things. So as far as that investment goes, it is basically, since, as I mentioned, that the Jammu Kashmir tunnel project we have taken in the consortium, so we have found an LLP. It is the working capital provided to that LLP, so it is appearing as investment in that company. It is for the tunnel project for Jammu Kashmir. And as far as your second question was? Second question is, sir, second question is regarding substantial reasons for substantial jump in the receivables. Sundry debtors. No, 209 crores. Yeah. So sundry debtors, the thing is, we must have put in the monsoon work, whatever was happening, particularly in BNC or MMRDA. The major bills were submitted just before this thing. So that is the reason we have a jump in the, the debtors. Sir, my last question. Haji. Share in the LLP, like share of capital in the LLP. Sorry? What is the share? What is the Markolines in the
in the said LLP for Jammu and Kashmir? 25%. So, sir, it's a minority holding. Yeah. So, but we are, it is a huge project. So it is, we have taken three contractors put together. We have taken this project together. Hello. Mr. Our Kabra, share do you of have any the further share question? of the contract work is also going to be 25. Yeah. Okay, sir. Thank you very much for your reply, sir. Thank you. Thank you, Mr. Kabra. We'll take the next question from Chanish Thadani, who has put a question on chat. Chanish, you are unmute. You can go ahead, please. Yeah, I would like to know why the cost of percentage of cost of materials consumed this year has gone up to almost 30% of the sales, whereas normally it was under 10%. Don't you think it's too much? I mean, 3 times. I have never heard in my history the cost of materials being used going up by 3 times year on Sir, year. yeah. So, sir, if you look at the entire financials, 1 second, let me just get to that. So, the cost of material, when we outsource the work, the cost of material doesn't appear, then it comes as an other expenses. Wherein now this year we are doing majority of work ourselves. Yeah, so you can see the cost of material has gone up and other expenses has come down. no, I couldn't hear. Sir, if you look at, Yeah. when we outsource the work, Yeah. there was a lot of work which we had outsourced. Uh-huh. So that is the reason there was a less purchase, and the purchase was done by the outsourced agency. And that is how, if you combine the cost of material and other expense, you will get that the figures are in place. So you would say that this will be the standard norm in future? Yeah, we try to do as many projects as possible in-house. Only when we have a lot of projects together at a place, and when we do not have a spare bandwidth, that time we might outsource. No, it was my understanding that because the cost of materials consumed has gone up so much, 3 times, the profitability has been affected because of that. And whether this is an aberration or it will continue this way in future also. No, This was sir, my yeah. I understand your concern, but if you look at my EBITDAs generally, even if we outsource or we do the in-house, our EBITDA generally are stable there. Our margins are steady. Mm-hmm. But No, of basically, course, there would be a little bit of enhancement in terms of margins, and that is how we try to do whatever maximum work we can do in-house. no, basically, I am not concerned with the profitability going down this half year in comparison to the previous half year and so on. But I felt that because of the cost of the materials having gone up, the profitability has been affected, and whether this will be a standard norm in future or not. And if you can just throw some light as to the future prospects, I would be grateful to you. No, future prospect in terms of what? Of the performance of the company. Yeah, if you have gone through our this thing, majority, if you understand Markolines, we work majorly into the private space in the highway sector, and we work very transparently with the clients. So, generally, by and large, our profit margins are steady because we work, as I mentioned, we work very transparently with our clients. Practically, like we work on a cost plus basis. So, and in terms of the revenue, yes, we have been giving a steady growth over last few years, and we intend to do the same in coming next 1 or 2 years. I see.
Okay, understood. Thank you very much. Yeah. Yeah. Thank you, I have a Chanish. question. Yeah, Parth, please go ahead. थैंक यू विजय सर फॉर दिस कॉल। सर मैं हाँ जी, आपकी कंपनी में एक नया इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे हाँ जी, थोड़ा फंडामेंटली आपका बिजनेस समझना है। आपने जो क्या क्या चीजें करते हो वो आपने बताया, बट आप सर थोड़ा रेवेन्यू साइकिल के बारे में बताएंगे कि आप जब प्रोजेक्ट लेते हो और हाँ जी। एग्जीक्यूट करते हो तो कितना रेवेन्यू कौन से स्टेज पे आता है, लाइक प्रोजेक्ट के ओके, टाइम कितना आता है, खत्म होने के बाद कितना आता है, और कुछ परफॉर्मेंस गारंटी वगैरह देनी पड़ती है क्या, उसके बारे में आई वांट टू नो लिटिल बिट। बिल्कुल। Definitely, Parth, and thank you for being invested with us and have putting faith into us. As I explained, our product line, if you want to understand, it is divided into three major categories. जैसे मैंने बताया था, एक है हमारे कोर सर्विसेज हाईवे मेंटेनेंसेस, जिसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और मेजर मेंटेनेंस करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब हाईवे इज अ वेयर एंड टियर आइटम, सो हर 5 साल या 7 साल बाद उसको एक बार वापस रीस्ट्रेंथन करना पड़ता है। बट ये 5 साल का शेड्यूल अगर 7 साल पे लेके जाना है तो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ड्यूरिंग द course of the regular course. And major maintenance is something wherein every 5 to 7 years the entire road has to be overlaid with a 40 mm 40 mm का एक परत लगाई जाती है उस पे, so that the road is re-strengthened. ये है हाईवे मेंटेनेंस एक्टिविटी। फिर स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस एक्टिविटीज मतलब, हालांकि ये मेंटेनेंस का हिस्सा है, लेकिन चूंकि मार्कोलाइन का ये स्पेशलिटी है, हम लोग उसमें दो सर्विसेज बोलते हैं। एक है माइक्रो सरफेसिंग। माइक्रो सरफेसिंग माने अगर कॉमन मैन्स लैंग्वेज में बताना है तो लैमिनेशन ऑफ रोड। मतलब रोड जो है वो खराब बेसिकली पानी की वजह से होती है। जब पानी हाईवे के रोड के अंदर जाता है बिकॉज ऑफ द क्रैक्स डेवलप्ड, तो माइक्रो सर्फेसिंग के क्या करते हैं कि बेसिकली थिन लेयर 6 से 8 mm का एक इमल्शन प्लस एग्रीगेट का लेयर लगाते हैं, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जाता है। ये एक तो कोल्ड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, और इससे रोड की लाइफ मेंटेनेंस आगे चला जाता है, सो दैट द कैश फ्लोज कैन बी यूटिलाइज इफेक्टिवली बाय द एसेट ओनर। कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग मतलब रिसाइकलिंग ऑफ रोड, जहां पे रोड खराब है लेकिन वहां का मटेरियल रिसाइकल किया जा सकता है। उस पे एक 8-10 इक्विपमेंट्स का सेट होता है वो जो चलता है उसके ऊपर, और वो जैसे चलता है तो पुरानी खराब रास्ता वो निकाल के ऑनलाइन उसको स्ट्रेंथन करके वापस रिले करता है, और वापस उसको लोडर से कॉम्पैक्ट किया जाता है। फिर हमारी तीसरी कोर सर्विस में है स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, जिसमें मैंने बताया कि सॉइल स्टेबलाइजेशन और टनलिंग। सॉइल स्टेबलाइजेशन माने कि जो अभी नए रास्ते बन रहे हैं, नई नई अलाइनमेंट है, तो कई सारे रोड्स ये खेतों में से जाते हैं जहां पे हार्ड बेस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो वो बेस जो है वो केमिकली स्टेबलाइज किया जाता है, जिसके लिए जो इक्विपमेंट सीआईपीआर को इस्तेमाल करते हैं, वही इक्विपमेंट से अबाउट 150 से 200 mm तक रोड डिग किया जाता है। फिर उसमें केमिकल्स मिक्स करके उसको स्टेबल करके हार्ड किया जाता है। एंड देन लास्ट आई सेड कि हमारी और एक एक्टिविटीज जो रिसेंटली हमने चालू की है टनलिंग की, क्योंकि टनल बोरिंग में प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। सो दीज आर आवर कोर सर्विसेज। सो इसके अलावा आपने पूछा कि हाउ द प्रोजेक्ट साइकिल इज टिपिकली मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस अगर देखेंगे तो इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होता है जो 4 महीने से लेके 12 महीने तक चल सकता है। Approximately 45 days we get for mobilization, because we need to set up lot of machinery and mobilize the machinery, set up on plant, relocate and establish our camps on site, stock the raw material. So 45 days का हमको normally 30 से 45 दिन का हमको mobilization लगता है। उसके बाद में प्रोजेक्ट चलेगा 4 महीने से लेके 12 महीने तक। क्या नाउ पेमेंट साइकिल हमारी 1 महीने की एवरेजली बिलिंग होती है। सो बिलिंग अगर देखेंगे तो एवरी मंथ वी वर्क फॉर अ मंथ। 1 महीना काम करने के बाद अगले महीने के 8-10 दिन में हम लोग बिल्स प्रिपेयर करके क्लाइंट को सबमिट करते हैं, जो फिर
जॉइंट वेरिफिकेशन साइट पे होके, सर्टिफिकेशन होके, फिर ऑफिस में उनके जाके फिर पेमेंट आती है. So this is the cycle. So if I right from the mobilization to payment realization अगर देखेंगे तो averagely हमारा payment cycle would vary between 75 to 90 days. ओके सर. एंड ये टनलिंग एंड बाकी जो आपने बताया कि हाईवे मेंटेनेंस एंड स्पेशल कंस्ट्रक्शन वर्टिकल, उसमें भी सेम रहता है और कुछ परफॉर्मेंस गारंटी होती है कि कुछ परसेंटेज ऑफ मनी यू विल गेट आफ्टर 2 years और 3 years, वैसा कुछ रहता है? नहीं, हाँ, परफॉर्मेंस गारंटी का आपने पूछा था, मेरे इसमें से रह गया क्योंकि 2-3 सवाल थे आपके. यस, डेफिनेटली हर एक बाय एंड लार्ज मेंटेनेंस प्रोजेक्ट जो होता है उसको हम लोगों को परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है टू द ट्यून ऑफ 5% approximately. 5%. Okay. It could vary also at times, and thereafter once the work is completed we also have to give the defect liability, उसकी देनी पड़ती है करीबन एवरेजली 2 साल की. ओके. और ये टनलिंग और ये सारे प्रोजेक्ट्स में भी बाय एंड लार्ज ऐसे ही रहता है. वी हैव टू गिव द परफॉर्मेंस गारंटी ओवर द पीरियड ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन के बाद में डीएलपी देनी पड़ती है. ओके. तो सर इसमें ऐसा कुछ हुआ है कि जो ये किसी ने इन्वोक की हो ये परफॉर्मेंस गारंटी, या सो फार द आवर वर्क हैज बीन गुड? No, till now we are very proud that our performance guarantee as well as DLP has never been invoked, and we are known in the industry only based on our credentials, performance, and quality. If you have gone through our presentations, we say that we are the only company who has a technical technology center which backs up the quality. So practically हर एक चीज जो काम हम लोग एक्चुअली ग्राउंड पे करते हैं, बिफोर दैट वी टेस्ट एवरीथिंग इन द लैब बिफोर इट इज डन ऑन साइट. ग्रेट टू नो सर. एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन, जो आपने Sure. 500 crore ऑर्डर बुक किया, इज दैट कंफर्म्ड ऑर्डर बुक? एंड ये कितने टाइम में ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होगा, एंड हाउ इज इट स्प्लिट अपॉन हाईवे मेंटेनेंस, स्पेशल मेंटेनेंस एंड स्पेशल कंस्ट्रक्शन? ओके. सो जो 500 करोड़ का ऑर्डर है उसमें से मेजॉरिटी ऑर्डर होगा जो हाईवे मेंटेनेंस में होगा, और करीबन 100-125 करोड़ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो स्पेशलाइज्ड टनलिंग का वो होगा. Now, highway maintenance activities generally are, since they are short-term projects, we will keep consuming the orders and new orders will keep coming. And tunneling projects, they would run through over from 1 year to 4 years. अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो टनलिंग के 2 प्रोजेक्ट है, जिसमें एक प्रोजेक्ट हमारा 1.5 साल चलेगा, और एंड सेकेंड प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट विल गो at least 3.5 years. ओके. एंड सर अ लिटिल बिट, थोड़ा सा ये कि थोड़े लंबे प्रोजेक्ट्स हैं, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आ रहा है, तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट से कुछ रुकावट या कहीं पैसा अटकने के चांसेस हैं? बिकॉज इन अ इलेक्शन ईयर द फंडिंग माइट बी यूज्ड एल्सवेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट देयर प्रायोरिटीज माइट चेंज. सो ऐसा कुछ है कि कंपनी को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आगे? 2 चीजें. एक तो नॉर्मली एनएचआई के पास अपना बजट होता है विच इज, और जिस तरीके से हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, तो एनएचआई इज आल्सो टेकिंग एम्पल केयर दैट दीज पेमेंट्स आर मेड. बट मोर इम्पोर्टेंट इज दैट बाय एंड लार्ज हमारा गवर्नमेंट के साथ कोई काम नहीं पड़ता है अनलेस अ स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड टेंडर जहां हम लोगों के लिए हमारे रिकमेंडेशन पे बनाया है तभी बनता है. अदरवाइज वी आर वर्किंग विथ ऑल द प्राइवेट industry players. So it really does not affect our payment because of the elections. Yes, sir. Thank you. I'll let others ask. मेरे 1-2 सवाल और है, but if time permits, I'll get back to you, sir. Thank you. Sure. Otherwise, you can write to us also. I'll surely do that, sir. Thank you. Thanks, Parth. We'll take the next question from Anurag Agarwal. Anurag, you can unmute, please. Hi, sir. Thank you for the opportunity. सर मुझे इसमें टनलिंग रिलेटेड आपका जो नया वेंचर, अपना नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में थोड़ा समझना था. सर आई जस्ट वांटेड टू नो what is the scope of opportunity here, and is it a more margin accretive business as compared to maintenance, highway maintenance? Yeah.
सो बेसिकली अभी स्कोप के बारे में बात करेंगे तो मैंने पहले बताया था आपको कि इंडिया इज अ बेसिकली वी हैव अ वेरी वेरिड एंड ह्यूज terrain wherein the tunneling is required because there are lot of hilly areas wherein we are trying to uh, straighten the alignment for increasing the speed. मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर मैं सिर्फ मेरे जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट वाली जहां पे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ओनली फ्रॉम ऑन दी जम्मू कश्मीर हाईवे बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर देर आर अबाउट 30 tunnels that are happening on an maybe a length of 200 kilometers. So इस तरीके का स्कोप है हमारे पास, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे इंडिया में देर आर लॉट्स ऑफ हिली रीजन्स, और गवर्नमेंट और एनएचआई की यही कोशिश है कि इन सब में अगर टनलिंग एक्टिविटी करते हैं तो लॉजिस्टिक्स का स्पीड और इफिशिएंसी दोनों बढ़ेगा. तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन दिस एंड वी आर स्टिल ओपनिंग अप इन नॉर्थ ईस्ट. वो भी पोटेंशियल ऐड ही होते जाएगा, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ टनलिंग. And yes, definitely we are looking at increasing our profit margin in this specialized this thing, which should we will be in a position to get the result or the knowing more as we progress in the tunneling activities towards the end. गॉट इट सर. एक रिसीवेबल साइड एक और क्वेश्चन था मेरा. जैसे सर आपने कहा कि एवरी मंथ वी बिल एंड जनरली दिस मतलब द पेमेंट साइकिल इज जनरली अबाउट 75 to 90 days, राइट? तो currently if I see this half yearly turnover, हमारा मतलब अबाउट 80% के आसपास उसका टर्नओवर का अभी रिसीवेबल्स में है. So is there a chance where we are seeing कि there are bad debts as well, or are there any clients where we are facing some from with respect to payment? नहीं सर, इसमें अगर मेजॉरिटी जो बिलिंग है वो मॉनसून के आखिर में और थोड़ी से अंदर की पहले की होगी, बट देयर वुड बी नो बैड डेट्स. एक तो जैसे मैंने बताया कि now playing working with the private industry, now we have that comfort that there won't be any bad debts. We take ample care. Okay. Okay. And sir, lastly, अभी recently government of India ने एक notification निकाला था that we will cover all the potholes in national highway by 2024 कुछ date उन्हें लिखा था. तो are we seeing more traction towards maintaining or improving the quality of our road infrastructure in India, and is that translating into more business opportunities for us? And could you just give some uh, limelight or like some details regarding what type of tractions are you seeing in the order wins, or any tenders which are coming up which can be good for our business? Sure. Definitely, the way the NHA and government has focused on the infrastructure, and particularly even on the particularly on highway infrastructures, so अगर आपने हाईवे पे रिसेंटली ट्रेवल किया है किसी भी, तो यू मस्ट हैव सीन दैट देयर इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन लास्ट 5 years in terms of the quality or the highway riding quality also. The potholes, so yes, on national highway majority of the places the pothole issues are being resolved, and so this definitely translates even the whatever roads are being constructed today. ओके, जैसे मैंने बताया कि इन लास्ट 10 सालों में जब 14 किलोमीटर पर डे से हम करीबन 45 किलोमीटर पर डे नया रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. सो दिस डेफिनेटली इज ऑल्सो एडिंग टू आवर फ्यूचर पोटेंशियल, क्योंकि ये सारे रोड जैसे 5 साल बाद मेंटेनेंस को आएंगे, एंड दैट इज वेयर द पोटेंशियल लाइज फॉर अस. ओके, नाउ वी आर जस्ट जैसे अभी कंक्रीट रोड हमने करीबन 20-30 साल पहले जो पहले अडॉप्ट किए थे कई जगहों पे, अभी उसमें भी कंक्रीट रोड्स में भी मेंटेनेंस आएगा. वी आर आल्सो वर्किंग कि जहां पे हम लोग कुछ कंक्रीट के लिए भी अलग से सॉल्यूशन करें एंड मेंटेनेंस में उसके देख ले. एज ऑफ नाउ वी आर प्योरली फोकसिंग, क्योंकि मेजर ग्रिड जो है हमारी वो बिटुमिनस है, but we are also looking at an opportunity to
get into the concrete road maintenances. So these are the things which will which I see as potential for growth. Got it. Sir, any outlook on uh, how we are seeing the traction in order wins, or like what kind of a percentage win rate do we have in tenders? See, today, because of the huge potential, we are definitely be very choosy in terms of picking up the work orders. And in though tenders rehte hai, but in private industry, it is not like the government tenders where purely L1 is the only criteria. In the private industry, what happens is your performance, the solution that we provide, and the services that we provided are also measured. And as I said, we are the largest highway maintenance company now. And definitely we have an edge over the competition because of our performances in past and the credentials. Got it. So last question. So you said we have in your presentation we have about 30% share in highway maintenance business, and we are the largest player in this business. So let's say whoever is our closest competitor, what kind of a percentage share would that player have? So actually, sir, ऐसा है कि highway infrastructure industry is also a very small fraternities. So as but in terms of maintenance, when we say this potential, we are looking at purely the potential in the private sector, and we are the only company in India providing the entire spectrum of services. एंड हमारा अप्रोच जो है वो थोड़ा सा अलग होता है कि वी आर नॉट लुकिंग एट जस्ट कि क्लाइंट का कोई इंक्वायरी आया वी विल बिड फॉर इट. We work on a bundled products wherein when a tender is floated, our team would go, we will complete do the survey of that stretch, and कई बार हम लोग client को composite solution देते हैं. So उसकी वजह से by and large और प्राइवेट इंडस्ट्री में ऐसा है कि by and large they would have finalized कि what kind of a treatment they would want to do, who is the contractor they would want to work. So and till now we are one of the preferred vendor for all the funds and the InvITs. So that definitely gives us an edge over, as I mentioned. Okay. So sir, as such, no competitor is there with like which is even single competitor which is remotely close to like 20% of the market share or like 25 or whatever. नहीं सर, इसमें फिर बहुत फ्रैगमेंटेड है. Got it. then सर्विस वाइज शायद थोड़े बहुत होंगे, बट कंपोजिट स्ट्रक्चर और क्यूमुलेटिव बेसिस पे तो आई डू नॉट सी कि इतना बड़ा कोई मेरे जैसा दिख रहा है मेरे को, टू बी ऑनेस्ट. Okay. Got it. Got it, sir. Thank you. Thanks, Anurag. We'll take the next question from Anupama. Yeah, thank you for this opportunity. So my question is related to more towards the revenue jump which we had from FY22 to FY24. That is one, and the margins have contracted. Like we were at somewhere around 12.3% margins, and now we have come down to 10%. So what is the reason? First, what is the reason? Were we concentrating more on increasing market share, or what exactly the reason is for the margin contraction and jump in the revenue? Yeah, jump in the revenue was definitely because post listing we had a clear cut bandwidth, the working capital where we could take more projects and do the this thing which is visible as you mentioned in the revenue, right? Because we were listed in September 21. By the time we could have the result, it was March 23, where you see the substantial growth from 186 to 312. So that was the reason. And as far as the margins are concerned, as I mentioned, yes, at times, in terms of when we have to do the turnovers,
But we work in a very, as I already mentioned, very transparently. By and large, our margins are maintained, what do you say, on a cost plus basis we work. So that is how our margins, they are hardly varying. If you look at my net profitabilities, they would be very pretty stable. Anupama, do you have any further question? Yeah. And the other question is, I was just attending a few more, con calls. So generally, when we talk about demand, since elections are around the corner, and so any slowdown in orders or any slowdown in work you are seeing, though you are not directly connected to government institutions, you are doing through private parties, but any kind of H2 slowdown you are No. can sense? As I mentioned, because infrastructure highway, that is also today need of an hour if we have to be a developed economy in next 20, 30 years. So generally the government has, irrespective of the elections, they have clear-cut focus and which is on the infrastructure development. So I don't see any slowdown when for the elections. Okay. And the other thing is, do we consider like Tina Rubber as a competitor? Like, do they provide similar kind of services? What we Sorry? do? Tina Rubber, do we, I mean, you and Tina Rubber are competitors. Like, do they also provide the similar kind of services? No, I have not heard this name, but I will have to Okay. look into it, maybe. If you can just send me the details of that company, I can look into it. I do not Yes, know sure, what services they provide. sure. Fine. That's it from my side. Thank you so much. Yeah. Thank you, Anupama. We'll take the next question from Preetham Chandra. Preetham, you can go ahead, please. Hello. Hanji. Yeah, sir, I would just like to know the segment-wise margins. Segment-wise, which segment Like you have wise? two, three, I mean, like you have two, three segments, right? Like one is the tunneling, then one is the maintenance. So, मतलब इनका अलग-अलग करके आप मार्जिन बता सकते हो कि ये वाला सेगमेंट का इतना मार्जिन होगा? So, preventive and the regular specialized maintenance services, they are generally the bundled this thing. They come under the maintenance activities only. और जैसे मैंने बताया था, और specifically, particularly the tunneling. So we are expecting कि okay, with tunneling we can have little bit of more margin, but it is very difficult for us because the road maintenance is a very dynamic, or the product mix is very dynamic. So जैसे depending upon the road condition, the volume of the service, one service to other would vary year on year. It could vary, and by and large, since it for as a client for them it comes under a maintenance of a highway. और जिस तरीके से हम काम करते हैं तो हमारा मार्जिन बाय एंड लार्ज सब में सेम होता है. But as far as tunneling is concerned, we are looking at enhancing our bottom line over the coming 2-3 years, at least by no substantial amount, some maybe marginal, maybe you can say 1 or 2%. We are looking at it. Otherwise, the margins are pretty same and steady. Okay. So, sir, I mean, as of now, you have like around 500 something kind of order book. So, how much more can you bid for at this point of time? And if I could know what is the where are you coming from, then I could answer. See, I can bid for, like now, I have an active pipeline of 400, and if you've listened to the earlier conversation, my projects are generally short term. So I have to keep bidding because we keep consuming the orders month on month. Okay. Got it. Okay, sir. So, I mean, and the last question is like, just a minute. Segment with margin is gone. Okay.
So like if you see for the long term point of view, like for 3 to 5 years, what would be the, I mean, the guidance, I mean, if you could give any guidance for us, किस बारे में? like your order flow or your revenue targets for the, next 3 to 5 years, and To also be the margin trajectory, like will the margins rise as you get more orders, or, I mean, or like how will it be? okay. As I said, since we work very transparently and we practically work on a cost plus basis with our clients. So for Okay. us, the volume is the only solution for the growth in terms of increasing the our bottom lines. So by percentage, we are trying with the specialized construction activities to improve a little bit onto the bottom lines. Okay. हाँ जी. Okay. And like, I mean, like the guidance, if you could like guide us, what will be the revenue for the next 3 to 5 years? Sir, now being in the public domain, मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए. It will amount to something else. Okay, okay. Sure, Sorry sure. for that. Got it, sir. No, Yeah. no issues, sir. Thank you so much. Thank you. Welcome. Preetham. We'll take the next question from the line of Pratik. Pratik, you can go ahead, please. Pratik Chaudhary. Am I audible? Yes. Yes. सर ये जो आपने 400 करोड़ का नंबर बोला जो हमारे प्रोजेक्टेड हमें मिल सकते हैं ऑर्डर्स, तो इसमें हिस्टोरिकली हमारा किस तरह का विन रेट रहा है इन ऑर्डर्स में? सपोज हमारी जो भी पाइपलाइन रहती है उसमें हम रफली कितने परसेंटेज हमको फाइनल ऑर्डर्स में मिल जाते हैं? सर, क्या रहता है कि 400 करोड़ जब मैं एक्टिव पाइपलाइन बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये रहता है कि these are the projects which are due for the maintenance, let's say over 6-8 months of time or maybe 1 year. जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम लोग ऑर्डर्स कंज्यूम करते रहते हैं, so we have to keep bidding for it. As far as हम लोग बाय एंड लार्ज उसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो हम लोगों को मालूम रहता है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमको टेंटेटिवली आएगा, क्योंकि with our credentials, performances, relationship with the clients. So ये 400 करोड़ का जो है, इसमें मैं यही कैलकुलेट करता हूँ जो मेरी एक्टिव है. इसमें से आप ये मान के चलिए कि मेरे को एटलीस्ट मोर देन 50% तो आ जाता है. बट ये 400 करोड़ भी डायनेमिक नंबर है. अभी 400 है, अगर कोई 2-3 टेंडर अगले महीने में खुल जाते हैं तो ये 400 का एक्टिव पाइपलाइन 600 हो जाएगा. बिल्कुल. और आपने जैसे मार्केट आपने बोला कि जो हमारा हाईवे मेंटेनेंस वाला जो मार्केट है उसमें हमारा 30% शेयर है, करेक्ट? हाँ जी. तो मतलब अगर हम हमारे जैसे रेवेन्यूज हम देख रहे हैं 300 करोड़ के आसपास के हैं, उसमें से अगर मैं मानूं 80% रफली आपके हाईवे मेंटेनेंस से होगा, तो पूरी एंड इफ दैट इज इक्वल टू 30%, तो मतलब पूरी मार्केट 700-800 करोड़ की है, राइट? हम लोग जो है वो मार्केट जो मैंने पोटेंशियल आपको बताया है वो प्राइवेट स्पेस का ही आज की तारीख में हम कैलकुलेट कर पाते हैं, क्योंकि अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट. देयर इज नो ऑफिशियल डेटा. ये भी हमारा थोड़ा सा अनुमान है. तो क्योंकि आपके ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है और ऐसा कोई डेटा नहीं है. बट जो एंड मार्केट का साइज है प्राइवेट सेक्टर के पास जो है वो है 700-800 करोड़ का. हाँ, 2000 करोड़ तक होना चाहिए. 1500-2000 करोड़ होगा. तो फिर हमारा मार्केट शेयर तो और कम हुआ ना? नहीं, अभी वही मैं बोल रहा हूँ कि एज वी आर ग्रोइंग, जैसे मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि 1500-2000 करोड़ का पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, बराबर है. अभी जैसे मैंने बताया कि ये कोई ऑफिशियल डेटा कहीं पे है नहीं कि पर्टिकुलरली ऑन रोड मेंटेनेंस एंड हाईवे मेंटेनेंस प्राइवेट इंडस्ट्री में कितना हो रहा है. बिकॉज इट इज अ बंडल्ड सर्विस. जब ये प्राइवेटाइजेशन की है तो इसमें
when a road asset is given to let's say a private asset owner or a fund or any company, so unke liye it is a combined tender of construction and maintenance. सो इसके नंबर्स नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा 30% है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1500 करोड़ का आज की तारीख में ये मार्केट है जो ग्रो हो रहा है. सिमिलरली वी आर ऑल्सो ग्रोइंग. दिस इज हाउ दीज नंबर्स आर कमिंग. तो इसमें हम मतलब जैसे इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, राइट, हाईवे एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद उनके क्या इंटरनल रिसोर्सेज नहीं रहते कि वो उसको मेंटेन भी करें? बिकॉज इफ दे हैव द मशीनरी टू कंस्ट्रक्ट द हाईवे, डू दे नॉट हैव द रिक्वायर्ड मशीनरी एंड मैन पावर टू गेट इट रिपेयर्ड आल्सो? मतलब इन हाउस उसमें कितना होता है कि ये लोग खुद ही दो चीजें होती है सर. कंस्ट्रक्शन हाउसेस में जो अभी द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, हाईवे इंडस्ट्री इज चेंजिंग वेरी फास्ट. मतलब हम 2009 में बीओटी में आए और आज 2023 में टीओटी में चले गए हैं, जहां पे भी डोमेस्टिक प्लेयर्स जो कंस्ट्रक्शन हाउसेस थे वो अभी सारे दे आर सेलिंग देयर प्रोजेक्ट्स और एसेट्स टू द फंड्स. और फंड्स जो आ रहे हैं ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ अ बैंडविड्थ, सो आउटसोर्सिंग इज एन ऑब्वियस थिंग. एंड सेकेंड, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स है जो आप बता रहे हैं कि यस डेफिनेटली अगर वो चाहते हैं तो ये मेंटेनेंस कर पाएंगे, लेकिन 500 करोड़ वाली कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है उसके लिए 50 करोड़ के काम के लिए मशीनरी डिप्लॉय करना प्रोबेबली मस्ट नॉट बी वेरी वायबल. और फंड हाउसेस तो हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम तो फंड्स के साथ ही काम करते हैं मेजरली. एंड सर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना था कि जो हमारा जो भी हम काम करते हैं हाईवे मेंटेनेंस में, उसमें हम सारा सिर्फ अपना मशीनरी यूज करते हैं या हम आउटसोर्स भी करते हैं? मेजॉरिटी जो की इक्विपमेंट्स रहते हैं तो हम लोग खुद के भी हैं हमारे कुछ सेट, सो दैट वी हैव अ कैप्टिव कैपेसिटी टू डू दैट. बट बाकी हम लोग एसेट लाइट मॉडल पे ही काम करते हैं. जो मशीनरी इजीली बाहर से अवेलेबल है वो हम लोग आउटसोर्स करके रेंट पे ले लें. तो मतलब अगर मैं समझना चाहूँ कि कल को आपको अपना टर्नओवर साइज अगर बड़ा से यहाँ से अभी 300 करोड़ से डबल करना हो, सपोज 600-700 करोड़ आपको साल का टर्नओवर पे जाना हो, और वैसी अगर हमको डिमांड आ जाए बाय चांस, तो हमें रैंप अप करने में कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि हम बाहर नहीं. से. हाँ. और सर ये 300 करोड़ में हमारा बाइफरकेशन क्या है हाईवे मेंटेनेंस और टनलिंग का? या अभी जैसे मैंने बताया कि हाईवे मेंटेनेंस का तो बाइफरकेशन मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आज की तारीख में 300 कौन से 300 करोड़ बोल रहे हैं आप जो एग्जीक्यूट हुए लास्ट ईयर के? हाँ जी, हाँ जी, जो FY23 के लास्ट ईयर के टनलिंग में आई थिंक इट वाज मे बी यू कैन से 70-30. तो मतलब 60 करोड़ नहीं, 80 करोड़ करीब का टनलिंग था. हाँ, 60-65 करोड़ का टनलिंग का काम लास्ट ईयर में किया था हम लोगों ने. ओके, बाकी सारा हाईवे मेंटेनेंस का. हाँ जी. और और इस साल भी इसी टाइप का वो रहेगा, स्प्लिट रहेगा? हाँ, प्रोपोर्शनल्स सिमिलर रहेंगे सर. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. आई विल गेट बैक इन इट. मोस्ट वेलकम. Thanks, Pratik. We'll take the next question from the line of Rajesh Singla. Rajesh, you can go ahead, please. Yeah, hi, sir. Can you hear me? Yeah, I can. Yeah. So if you look at, sir, the order book movement, maybe if I don't know if I might have missed it, but I didn't see any investor communication from your side of like 250 crore kind of order which you might have received during the first half of FY24. So if you can elaborate a bit on that. And second thing, like what kind of uh, execution we can expect in the second half of this year, like given the first half probably was impacted by monsoon and very seasonally a weak half versus the second half. So what kind of revenue we can expect in the second half, and the margin expectations, if you can highlight, share some insight on that.
अच्छा सर, एक तो मेजोरिटी जो आपका ऑर्डर जो था रिसेंटली, टिपिकली द हाईवे इंडस्ट्री क्या होता है कि ड्यूरिंग द मॉनसून द ऑर्डर्स आर फाइनलाइज. ये अभी रिसेंटली वी हैव गॉट अबाउट 3 to 4 मेजर ऑर्डर्स. Okay, 4 projects which are running Okay. currently, so that have added to the order book. Or as far as the future is concerned, जैसे मैंने बताया कि मैं exact numbers पे तो बात नहीं कर पाऊंगा. I am into some, I have some protocols and this thing to follow. But जैसे हम लोग growth देते आए हैं, we will keep on the growing. We have enough. अगर बाय वॉल्यूम भी देखेंगे तो इजीली मेरे पास 1.5 से 2 साल की विजिबिलिटी दिख रही है with confirmed work in hand. So you will see a good growth this year also. So last year, for example, in FY23, we gave like 67% revenue growth, and the net profit increased by 60%. So can we expect a similar growth in FY24 as well, based on your comments so far? The 60% over the smaller number, but वॉल्यूम में ये सब्सटेंशियल ग्रोथ आएगा. परसेंटेज में मैं निशान नहीं बात कर पाऊं, बट वॉल्यूम में सब्सटेंशियल ग्रोथ आएगा. Okay, so based on that, so maybe second half could be like maybe 60, 70, or 80% higher than the first half. We will try for that. Okay. And in terms of the margin, like what will help you in improving your margins going forward? Like, are you like deploying more automation, or like what, or the scale will help you in improving your margins? So what will drive your margins higher in the coming month, coming half, or maybe next year? So जैसे एक्चुअली ये पॉइंट किसी ने कवर किया था, मैंने बताया कि प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसली काम करते हैं, तो वॉल्यूम द स्केल इज द ओनली दिस थिंग फॉर ग्रोथ, बिकॉज बाय एंड लार्ज अदरवाइज मार्जिन्स आर डिसाइडेड बिफोर. परसेंटेज वाइज वी विल. सो इसीलिए ये जो स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, पिच पे हमारा फोकस हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं कि जिससे हम थोड़ा सा हमारा परसेंटेज वाइज भी बॉटम लाइन बढ़ा पाए. Okay, okay. And maybe if I missed it earlier, maybe I joined a bit late. So in terms of the order book which you had at the end of 30th September, that is 504 crore. Out of that, you said I think around 100 crore is for tunneling, and rest 400 crore is for the highway maintenance, which is हाँ, primarily करेक्ट. टनलिंग का उसमें से मेरे हिसाब से अभी बैलेंस डिटेल आई थिंक 170 करोड़ का बैलेंस होगा. tunneling. Okay, 170 crore is the tunneling, and like maybe 330, 340 crore is the highway maintenance. And that Correct. highway maintenance is usually like spanning up across like 9 to 12 months. Like what is the duration of that? 4 to 12 months. और ये 4 जो to 12 months. ये जो ऑर्डर्स हैं ये कंज्यूम भी होते जाएंगे और आते भी जाएंगे. जी. So 4 to 12 months is the highway maintenance, and you're saying that second half is usually quite heavy on highway Correct. maintenance as compared to the Correct. first half. Okay. हाँ, बिकॉज बारिश की वजह से काम नहीं हो पाता है. So जी, that is how the first it could vary in the H1 and H2. Okay. And anything on the geographical split of this order book, like how much you have, like 330, 40 crore of that highway maintenance, like where are we doing this highway maintenance on a pan-India basis? Is it a pan-India coverage, or it is like Yeah, it is restricted to pan-India coverage. As of now, the Markolines Pavement, we are working across all this thing. We are currently working in Maharashtra. We are working, I think we are just about to finish that. In West Bengal, we are working in Jammu Kashmir, and now then Andhra Pradesh, Telangana, UP, Maharashtra, Rajasthan. So it is pan-India. Okay. And maybe my last question would be on the tunneling. So this is a new business. So what kind of annual revenue potential do you see maybe in a few years' time from this tunneling business? So like right now you have like 170 crore order book, but how big you can make this particular business? See, as I mentioned, there is we see a huge potential there. So once we have our hands-on experience and get more mature in this, we can expect even the exponential growth.
So what? Okay. Fine. Thank you, sir. Thank you very much. Most. Thank you, Rajesh. Before we move to the next participant, so there's a question in the chat from Mr. Dipankar Sur. Can you please clarify what is the reason from the drop in H1 FY23 revenue versus H1 FY22 revenue? That is 132 crores or 152? Okay, sure. जैसे मैंने बताया कि particularly in infra industry, the turnovers in H1 and H2 could vary because of the monsoons. जैसे इसमें हमारे पास मॉनसून किस तरीके से होता है, हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स है वहां पर्टिकुलरली उस रीजन में मॉनसून किस तरह से चल रहा है, सो इस वजह से हमारे द टर्नओवर्स कुड वेरी इन H1 एंड H2, क्योंकि दिस इज वेरी डायनेमिक. जैसे लास्ट ईयर में वेस्ट बंगाल में काम कर रहा था, तो अभी तेलंगाना में काम कर रहा हूँ, अगले साल तेलंगाना में काम कर रहा हूँ, तो शायद और किसी जगह काम करूँ. उस साल उस समय वहां बारिश कितनी होगी, so we are not sure. So that is the only reason for drop in H1 comparatively. But if we look at the yearly performance, rest assured Markolines will give its performance whatever we have been saying about. Sure, sir. We'll take the next question from the line of Nitya. Nitya, you can go ahead, please. Yeah, hi Vijay sir. So yeah, I Hi. just wanted to understand आपका जो tunneling business है, which states is it present in at the moment? Currently we are working in Maharashtra and Jammu Kashmir. Only 2 states? Yeah, 2 project ही हमारे पास. ओके तो मैं क्या समझना चाहता था, लाइक द नॉर्थ ईस्ट एरिया इज हाईली माउंटेनियस, तो वहां पे बहुत स्कोप रहेगी राइट फॉर टनलिंग वर्क. हाँ जी. तो वहां पे आपको कुछ ट्रैक्शन मिल रहा है ऑर्डर्स में इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया? सी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक तो ये लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाई वैल्यूड प्रोजेक्ट्स हैं. सो एक प्रोजेक्ट आने के बाद वी आर गोइंग बिट स्लो ऑन दैट, सो दैट बिकॉज हमारे वी आर ऑल्सो बिल्डिंग द कैप्टिव कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल मैन पावर. सो बट यस, ग्रोथ आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं. यस, डेफिनेटली इट इज नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, इट इज ऑल अक्रॉस द कंट्री. वी हैव द हिली टेरेन, may it be Nilgiris in south, Himalayas or the Coromandel in south, or the even the northeastern states where Himalayan range is there. There is a huge potential in coming years. ओके सर. और सेकंड मेरे को पूछना था दैट व्हेन यू आर डूइंग दीस टनलिंग प्रोजेक्ट्स, आर यू डूइंग दीस एंटायरली बाय योरसेल्फ और इज इट आल्सो विद अनदर फर्म where they are also working with you like a joint venture kind of thing? Yeah, जैसे कि यस, ये जो यहाँ महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है वो हमने खुद लिया है, और जम्मू कश्मीर का प्रोजेक्ट है वो कंसोर्शियम में लिया है. ओके सर. और सेकंड मेरे को पूछना था सर कि नाउ आई हैव बीन रीडिंग कि जो हाईवे का टारगेट्स जो दिया था गवर्नमेंट ने, लाइक इट्स नोवेयर क्लोज टू रीचिंग दैट लेवल. सो आर यू सीइंग अ स्लो डाउन इन द एंटायर सेगमेंट ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन? नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं उससे मैं, हालांकि we have been consuming the allotted budget onto the highways, and in fact Gadkari ji has been very dynamic in terms of allocating the budgets and maintaining the growth. Because sir, I've read that because of the cost overruns, there's a big problem in execution. जो काम समझो 50 kilometers per day का target था, it is nowhere close to that because of these cost overruns. That's why I wanted to understand जो pace of growth है इसमें, वो order book है लेकिन execute हो रहा है कि नहीं, वो मैं समझना चाहता था. Okay, maybe I do not have the details as I am not into constructions, लेकिन इसमें ये बात बता देता हूँ कि एक तो जो कंस्ट्रक्शन है वो और हमारा बिजनेस आज की तारीख में कोरिलेटेड इमीडिएटली नहीं है, क्योंकि आज जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो 5 साल के बाद मेरे को मेंटेनेंस को आएगा. राइट. और पिछले 5-10 साल में इतना काम हुआ है कि देयर इज ह्यूज पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ दीज रूट्स. Understood. So at the moment you are very well placed due to the highways built over the last 5 years, right? Yeah. Okay. Thank you, sir. That's it from my end. मेरे पास डेटा नहीं है कंस्ट्रक्शन का.
Correct. This is what I have read recently because I was just trying to see that how much it would correlate to you. The Yeah. slowdown in highway, how would it affect you? I wanted to understand. और दूसरा क्या है सर, इसमें ये रिकरिंग बिजनेस है, सो इट इज नॉट ओनली द ग्रोथ, Right. ग्रोथ इज एडिंग टू द पोटेंशियल, बट आज जो रास्ता करता हूं मैं 5 साल के बाद इट विल अगेन कम फॉर द मेंटेनेंस टू द मार्केट. Right, sir. So it is a Okay. recurring as well as the growth. Both we need to factor. Got it. Got it. Okay. Thank you, sir. Wish you all the best. Thank you. Thank you, Nitya. We take the next question from Anurag Agarwal. Anurag, you can unmute. Thank you for the opportunity again, sir. सर मेरे को दो चीज वापस क्लैरिफाई करनी थी. एक सर आपने कहा कि हमारा मोस्टली जो अभी रोड नेटवर्क है इंडिया का दैट इज बिटुमिनस एंड इट इज नॉट कंक्रीट. तो एक चीज मुझे समझना था, लेट्स से अगर कोई कंक्रीट रोड बनता है तो उसका मेंटेनेंस कितने साल में वापस आता है मार्केट में? सर ऐसा है कि कंक्रीट रोड जो बनाना था तो हाईवे, नेशनल हाईवे ने कई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में जैसे कई कई जगहों पे उन्होंने अडॉप्ट किया है, बट बाय एंड लार्ज अभी नेशनल हाईवे बिटुमिनस पे ही चल रहा है. कंक्रीट रोड का लाइफ डेफिनेटली इज फ्रॉम 30 to 40 years, और मेंटेनेंस 20 साल के बाद थोड़ा बहुत आएगा. लेकिन द प्रॉब्लम विद द मेंटेनेंस और द दिस थिंग इज दैट कंक्रीट का जो रास्ते में नॉर्मली रिपेयर नहीं हो पाता है, उसमें पैनल रिप्लेसमेंट करना यही सबसे बड़ा ये रहता है in terms of maintenance. So of course we are also working on few solutions where we could come out with for the concrete roads, but that is still in the early stages. We are eyeing on it. Okay, so concrete road जो है वो मेंटेनेंस में एक तो परसेंटेज वाइज हाईवे नेशनल ग्रिड में बहुत कम है, और अगर उसका मेंटेनेंस ही देखना है तो प्योर मेंटेनेंस वुड कम बहुत लेटर आएगा. जैसे फर्स्ट फेज में हमने जब 90s to 2000 में बनाए थे वो अभी मेंटेनेंस के लिए आ रहे हैं. गॉट इट. तो सर इसमें मुझे ये समझना था कि अगर कंक्रीट रोड का भी ट्रैक्शन क्या है, मतलब व्हाट इज स्टॉपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बिल्ड मोर कंक्रीट रोड्स एज कंपेयर्ड टू बिटुमिनस रोड? जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें प्रॉब्लम ये है सर कि कंक्रीट रोड इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी. अगर बहुत पुराने ब्रिटिश कालीन रोड देखते हैं तो वी हैड दी कंक्रीट रोड्स. द ओनली प्रॉब्लम विद द कंक्रीट रोड इज व्हेन दे आर डैमेज्ड, ये रोड उठा के डालेंगे कहाँ टू रिप्लेस द रोड. गॉट इट. गॉट इट. एंड कॉस्ट वाइज भी फर्क तो होगा ही. एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इज आल्सो a lot, you know, particularly cement road और cement industry की लेबर, उनका हाइजीन और जो है सेफ्टी, rather than another issues they do not relate to us. I think I was reading up on this in US market also. I think वहाँ का भी major network is bituminous, at least concrete है भी तो ऊपर से bitumen का layering है. Correct. Am I right? हाँ, अभी जैसे हम लोग भी कुछ मैंने बताया ना कि कंक्रीट रोड पे सॉल्यूशंस के लिए बात, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर कंडक्टिंग फ्यू ट्रायल्स कि अगर उस पे कोई बिटुमिनस रोड या माइक्रो सर्फेसिंग करके अगर हम कुछ कर पाए, बट दैट इज स्टिल इन अर्ली स्टेजेस, वी आर वर्किंग ऑन इट. गॉट इट. सो लास्ट क्वेश्चन, जैसे सर बिटुमिन क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव है, तो क्या कहते हैं, हाउ डज लाइक crude oil का fluctuation affect your profitability? Does it not affect your profitability कि bitumen का तो cost जो भी मतलब customer होगा वही pay करेगा, and over and above हमारा manpower and servicing का उस पे cost होगा, या फिर do we procure bitumen on our own and कल को rate fluctuate होता है तो उससे हमारी profitability भी फर्क आता है? नहीं, so my all contracts are covered with the escalation clause, so bituminous का जो variation है it really does not affect us. Okay. Whatever the price difference, we get it additional in the contract value. Okay, sir, and मतलब ये बहुत वैसे बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है, बट लाइक हैविंग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, अगर हमारे पास बिटुमिन का सोर्सिंग हो, बेटर सोर्सिंग हो, सो वी कैन हैव बेटर मार्जिन्स, राइट? सो हैव यू एवर थॉट इन दैट लाइन नहीं, कि हम
नहीं सर, एक तो बिटुमिनस जो बिटुमिन इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलरली इन रोड मेंटेनेंस, मोस्ट ऑफ देम insist on the bitumen from the government refineries only. Got it. Got it. So ये Okay. particularly जो BOT पे रास्ते लेते हैं at the construction phase, that might help, or maybe states or the other grids they must be producing, but then it is we do not take it in our scope. Got it. Sir, lastly, Anurag, we need just one very small question. Do we see quarterly results being published in the future? Yeah, as we will grow, and we are also implementing the new ERP. So slowly, we will also get onto the quarterly results. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Awesome. We'll take the follow-up questions now from Parth. I would request you all to quickly just stick to one question since we've gone over time. Parth, you can go ahead and ask your question, please. हाय सर, मेरे को ये पूछना था कि इज आवर ऑर्डर बुक 100% प्राइवेट, जो एग्जिस्टिंग 300 करोड़ की और आगे की ऑर्डर बुक है? और ये क्वेश्चन था, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हमारे जो क्लाइंट्स है, आपने बोला कि एबिटा मार्जिन्स मोर और लेस फिक्स्ड रहते हैं क्योंकि कॉस्ट प्लस बेसिस पे करते हैं, तो और तो इसके रिलेटेड कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो NHIA बनाती है, NHAI, उसका मेंटेनेंस कौन करता है? एंड सिंस कैपेबिलिटीज सेम है, तो कैन वी लुक इनटू servicing roads which are still owned by the government? Can we do that? दो तीन चीजें सर कि प्राइवेट इंडस्ट्री में काम इसलिए करते हैं बिकॉज so that we are assured about the performance in terms and the payment also. NHI के साथ गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत उसमें इंटरफेरेंसेस, इन्फ्लुएंसेस और लोकल कंपटीशन, particularly it goes on the cost basis, and हम लोगों ने we have decided not to get into that. That's a good idea, sir. और सर एक लास्ट क्वेश्चन कि कितने हमारे पास जैसे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, तो कितने न्यू प्राइवेट क्लाइंट्स हम लोग ऐड कर रहे हैं? और एग्जिस्टिंग क्लाइंट में से जो हमारे हैं, जो आपने स्लाइड दिखाई थी, वो कितने सालों से है सर हमारे पास? और कुछ नए प्राइवेट क्लाइंट्स भी ऐड हो रहे हैं क्या आपने? हाँ, नए एक तो जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री बहुत लिमिटेड फैटर्निटी है, कुल मिला के सारे अगर बड़े प्लेयर्स देखेंगे तो एक 20 के करीब होंगे. And now with the funds coming in, lot of funds who have come in are procuring or taking over the project from the domestic operators. तो प्रोजेक्ट्स नए नए ऐड होते जाते हैं, क्लाइंट्स भी ऐड हो रहे हैं, बट अभी जैसे देखेंगे तो फंड्स और इन्वेट्स विल ओनली कंट्रोल मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स ओवर नेक्स्ट फ्यू इयर्स. सो एडिंग न्यू क्लाइंट्स, यस डेफिनेटली इट इज हैपनिंग. जैसे मैंने बताया कि एक्टिस जो रिसेंटली मार्केट में आए हैं अभी फंड्स, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स एक्वायर शुरू करने हैं, दे हैव आल्सो come to us. We are working with them for we have already been awarded some work, and we are also eyeing few more projects from there. Right. We'll take the next follow-up question from Rajesh Singla. Rajesh, you can go, please. Yeah, hello, sir. Hello, sir. Can you hear me? Yeah. Yeah, okay. So maybe a couple of questions. One would be like, if I look at the last year, so last year your revenue in first half and second half were almost similar, but you had better margins in second half, but there was no major seasonality, it seems, last year, like as compared to this year, when you are saying that the second half will be much better than the first half. So that is the first question. Second would be like, are you well funded to execute the current order book, or will you require any further preferential fundraise? And the third question would be, I believe in the past you were trying to raise funds by right issue. So any specific reason why that got failed? So आपने मेरे को पहले पूछा, the first question was about your the H1 performances over last year, right? So as I said कि dynamics बहुत last year हमारे पास particularly monsoon के period में ही दो projects ऐसे थे जहाँ पे rain shadow area में थे, so we could work even during the monsoon per se.
इस साल की जो प्रोजेक्ट्स है जहां पे मानसून हो रहा है, रेगुलरली मानसून हुआ है वहां पे, दैट इज हाउ देयर इज अ डिफरेंस इन दी व्हाट यू से द परफॉर्मेंसेस. And second question was, sorry, can you just how will you fund the execution of the order? yeah, as far as current order book is concerned, we are sufficiently funded, and we will execute these projects from this. आपका एक सवाल था about the preferential, sir. ऐसा हुआ कि it was a coincidence that we announced the preferential on the same day when the Heidelberg disclosed the Adani report, and the market has gone through a lot of turmoil. So that was the reason then we had to withdraw that. Right. So we'll take the last question for the day from Mr. Gautam Kothari. Gautam, you can unmute and ask your question, please. Yeah, hi. Am I audible? Yeah. Yeah. So my question is, I was just going through last year's presentation of September 22, wherein it was mentioned that the order book is around 580 crores. Whereas if I see the execution over from September 22 till September 23, it is around total is around 300 crores. Also I understand there is not the major portion is highway maintenance. So only 50% has been executed, whereas generally it gets executed within 4 to 12 months. So I was expecting a major, out of 5 crores, I was expecting a major being executed in this 1 year, but it has not happened. Almost 50% only has been executed. Any specific reason for the same? सर जैसे मैंने बताया कि दो चीजें आप देख रहे हैं, एक तो टोटल ऑर्डर बुक जो है वो पर्टिकुलरली हाईवे मेंटेनेंस का जो है वो कंजम्पटिव टाइप का है, तो ऑर्डर्स आते जाएंगे और कंज्यूम होते जाएंगे. सेकेंडली इसमें जो ऑर्डर बुक है, जो मैंने बताया कि टनल के प्रोजेक्ट ऑर्डर बुक्स जो है दैट आर स्पैनिंग ओवर 2 और 3 years, जिसकी वजह से आप वो परसेंटेज जब आप देख रहे हैं तो यू माइट फील कि वी हैव नॉट एग्जीक्यूटेड. राइट सर, बट टनल का व्हाट आई अंडरस्टैंड इज वो टाइम पे तो काफी कम था, राइट? इन सितंबर 22 सर टनल का रेवेन्यू कम था, लेकिन वो जो ऑर्डर है 350 करोड़ का वो तो था ही ना वहां. See, if you are taking numbers, then we'll have to talk only in terms of numbers. Now, the order book versus execution, इसमें variation ऐसा हुआ कि the order book which is being consumed over the year is have a higher portion in terms of order value, और जो छोटे प्रोजेक्ट्स है वो रिकरिंग है, जो आते जाएंगे और कंज्यूम होते जाएंगे, नए आते जाएंगे. इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है. Otherwise, if you see on performances, we have been growing. Okay. And sir, one last thing. Assuming that the whole industry grows, like let's say the industry grows 3x in next 5 years, uh, do you see any bottleneck as far as, because we are a growing company, not necessary that we also grow by it can either happen 3x, or it can even not grow as far as the industry grows also. Do you see any bottlenecks here when growth is concerned? Will be able to match the industry growth? Yeah, we should be able to match it. हमारी सारी कोशिश तो यही रहेगी कि हम इंडस्ट्री के पेस को करें, and not only that, because and grow not only with the industry, but if we can surpass the industry growth, we will definitely try our best to do that. And as far as bottleneck is concerned, technically जैसे मैंने बताया, हमारे पास एजोर होता है, प्रेफरेंशियल वेंडर है हम लोग, so I don't see much of a bottleneck. And if at all it is financial, we can definitely work over it. At the most, that could be the bottleneck, which I do not see as of now. But agar, for an exponential growth, if that is this thing, then there are various ways and means that can be matched with. Right, sir. That was the last question for the day. Would you like to give any closing comment before we end this call, sir? Yeah, sure. Thank you guys for being on this call, and we are really happy to
answer your all queries and questions. And if at all we have, any of your questions have been left, if you have, or if any question pop up anytime later, feel free to write to us. We will be happy. We will try and answer your questions to the best of your satisfactions. And thank you for the faith and belief that you all have kept in us. And we will, live it up to it. Thank you very much. Thank you, sir. And that brings us to the end of this conference call. Thank you to all the participants for joining on this call. Thank You may you very much. connect now. Thank you.